in polynomial. My today's topic is how to find out zeros of linear, quadratic, and cubic. All of you know it very well कि in linear we got 1 0, ये definitely होता है pattern. In quadratic we got 2 zeros, and in cubic we got 3 zeros. Okay. अगर हम linear की बात करें, suppose that this is a polynomial, linear polynomial. Okay. Yes, Safra. How are you? Fine, fine. You? Are you able to understand my point? Yes, I can understand. Okay, okay. And I wasn't there in the last class, but I can still understand. Okay, okay. Can you start your video? Okay, 1 minute. When I'm talking about very good. Do you like math? Yes, sir. Math is actually one of my favorite subjects. Oh, that's great. I think सभी का favorite होता है, but number में पता नहीं ये क्या कर जाता है. And if math is your favorite subject, that is great thing. Okay. And your school, Afra? It's a nice school. It's actually in Kenya, CBSE though. Okay, you are also following CBSE. Yeah. How many chapters you have concluded in your school there? We have finished about 2 chapters already. Okay. And what is the basic difference there in Kenya, in your school? There's not much difference actually. It's practically the same. Okay, because you are also following the NCERT books? Yeah. Okay, that's nice. Chaliye, let us start. Thank you. We are starting with how to find out the zero of this linear polynomial. Okay, now in linear polynomial, what we will do, we will just put up polynomial equal to 0. Here we got 2x is equal to -5, and here we got x is equal to -5/2. This is the 0. Okay. In linear case, this is very, very simple. Now I come to second one part, which is known as quadratic. Now, when you are dealing with quadratic polynomial, actually we have already completed it in class 8. Okay. Suppose that this is the polynomial and we want to find out 0. Now it's crucial for all of us कि हम इसके zeros को किस तरह से क्या करेंगे, find out करेंगे. And when one unique method is there, is called splitting the middle term. What we can do? Splitting the middle term. Okay. तो हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. Now what is that splitting the middle term? Actually we want to find out the factor of this polynomial. Process is called factorization. Okay, now how we can deal with factorization? Yes, Daksh, jaldi se. Yes, sir, we have done this in the class 8. We have to first take out the number from which we get the
12 into 1, so the product will be 12 and the sum will be 7. So we have to take out the numbers by which adding or subtracting it, the product should be 12. Okay, very good. Actually, Daksh has told us about the process of splitting. देखिए splitting में क्या होता है बच्चों? First of all, we will multiply the three coefficients. Two coefficients, first and last. So that means A and C. Now check it. What is A and C in product form? 12. Now we want to split B into two parts such that their product will be 12 and their sum will be -7. बस ये चीज आपने कर. ओके, सी दैट. अब 12 के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? इट इज 1 into 12, 2 into 6, और आई कैन से 4 into 3. यही पार्ट होंगे ना? तो व्हाट वी कैन से, फोर इंटू थ्री. बिल्कुल, इट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन. नहीं नहीं बच्चे, वी आर यूजिंग पॉलिनोमियल. तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट इट एज 12x square minus 4x minus 3x plus 1. Now check my point, what I want to say. We just split the middle term minus 7x into two parts. और कुछ नहीं किया. And which is the next step where we used it as first and second. ओके, तो हम इनको क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं. तो इन द फर्स्ट ग्रुप चेक इट, व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन. तो वी विल टेक 4x as common. What is left? 3x minus 1. Now your next task is to take common from the second. अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है बच्चे कि your leftover part be 3x minus 1. So we can take -1 as common, and here we will left with this concept. And here we got 4x minus 1 and 3x minus 1. Okay, this is called factorization, which you have already done in your class 8. Okay, now what we can do? Put up is equal to 0. So we will get 4x minus 1, 3x minus 1 is equal to 0. Here you get x is equal to 1 by 4, and here you get x is equal to 1 by 3. That is the point. And these are two zeros of our polynomial, which is called quadratic. Okay, क्या बोलते हैं हम इसको? Quadratic polynomial. Now I come to cubic. देखो quadratic में ये best property होती है बच्चे when we solve this kind of question. Now when we are dealing with cubic, suppose that I want to find out the zeros of this polynomial. Okay, now this cubic can be solved by hit and trial method. Now what is hit and trial? जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं तीर तुक्का. ठीक, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा. ठीक, तो we can solve this by hit and trial. But before you solve it by hit and trial, see the constant value. Constant is 5. ये बच्चे हिट करने का तरीका है, सॉरी ट्रायल करने का तरीका है. हिट हो गया तो देखेंगे. तो what are the numbers which can divide 5? That is plus minus 5. ओके, 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? आइदर प्लस और माइनस. नाउ प्लस और -5, बस ये नंबर है टोटल
तो इनका हम ट्रायल करेंगे, दीज आर कॉल्ड ट्रायल। तो हियर इज अ पॉलिनोमियल px, ओके। तो आई विल ट्राई फर्स्ट बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 1। तो मैं x इज इक्वल टू 1 फिल कर रहा हूं, तो व्हाट आई विल गेट 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 5 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको बोलते हैं कि हमारा ट्रायल फेल हो गया, हिट नहीं हुआ। नाउ आई एम टेकिंग अनदर पॉइंट इज आई विल टेक -1। इसको इसी को बोलते हैं ट्रायलिंग। तो हम बार बार ट्रायल करते रहेंगे जब तक हिट ना हो जाए। तो नाउ आई एम पुटिंग -1 3 टाइम्स -1 स्क्वायर 9 टाइम्स -1 and -5, and here is -1 -3 +9 -5 and this is hit। अब चेक कर सकते हैं बच्चे, इज इक्वल टू किसके चला गया, 0 के इक्वल चला गया। तो आई कैन से द फर्स्ट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x minus 1। Now to find out the another two options, you have two methods। एक तो बच्चे जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। देखिए अब जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए मेथड आ रहा है। वन थिंग इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 विद x प्लस 1, जैसा हम लॉन्ग डिवीजन में करते थे। तो आई विल स्टार्ट विद द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्ड नेगेटिव, ओके, minus 9x minus 5। Now I will start with minus 4x minus 4x square minus 4x positive positive, it becomes minus 5x minus 5। Check it again बच्चे। Now I will multiply it with minus 5 and we got this। Now what is the answer? Our polynomial x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is divided into two parts. One is x plus 1 and another is x square minus 4x minus 5। Now what you will get? Okay, अब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंने इसको 1 प्लस से क्यों किया। बच्चे यहाँ x is equal to -1 वैल्यू थी, तो its polynomial is x plus 1। Polynomial can be divided with polynomial, that's why। Okay, now same way, now we will find the factor of this quadratic, जैसे हमने पहले किया by splitting the middle term। Okay, now I come to you with another method जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, which is very very short। चेक कीजिए, जो बच्चे मेरे साथ थे, that is called synthetic division। तो synthetic division क्या था, ध्यान से देखिएगा बच्चे। What is the coefficient of x cube? 1। What is the coefficient of x square? -3। What is the coefficient of x? -9। And what is the coefficient of that? -1। Okay, so we can solve। Now check it again। What is the value of x? अपने केस में x की वैल्यू क्या आई थी, -1। तो आई एम स्टार्टिंग हियर। दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। ये शॉर्टकट है बच्चे। तो सी व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट इस वन को एज इट इज लिख दीजिए। नाउ मल्टीप्लाई दिस -1 विद दिस वन, इट विल कम एज
-1, दोनों को ऐड कीजिए बच्चे, यू विल गेट -4. नाउ मल्टीप्लाई दिस -1 विद -4, इट बिकम्स 4. ऐड कीजिए -5. मल्टीप्लाई दिस -1 विद -5, इट बिकम्स 5 एंड 0. चेक कीजिए, जो लास्ट क्लास में मेरे साथ थे आपने सीखा होगा, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. 0 है ना, अपना भी रिमाइंडर क्या है, 0. अब मैंने आपको बताया था हाउ वी विल राइट डाउन द क्वेश्चन, तो मैं यहां से क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चे विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन. तो क्वेश्चन इज 1 into x² -4 into x and -5. एंड प्लीज चेक इट अगेन. आपका क्वेश्चन कितना इजी हो गया. ये है डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन और ये है लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन. ओके, दिस इज द शॉर्टकट नोन एज सिंथेटिक डिवीजन और ये क्यूबिक में बड़ी हिट है. नाउ व्हाट वी कैन डू, सेम वे, नाउ आई कैन स्प्लिट दिस 4 -4x into 2 parts. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो आई विल राइट इट एज x² -5x plus 1x -5. चेक कीजिए why I am doing so. -5 plus 1 ये होता है बच्चे -4, -5 into 1 -5. Now make the pair. First two pairs take x as a common, x -5. Now in next two take 1 as common, x -5. Now what you will get, x plus 5 and x -5. Now check my point, your pairs are x plus 1, x plus 1 and x -5. Now what we can do, to find out the zeros, we will put them equal to zeros. So in x plus 1 is equal to 0, second x plus 1 is equal to 0 and x -5 is equal to 0. Here you will get the values of zeros, -1, -1 and 5. These are the zeros of cubic polynomial. Got my point? तो इनको हम डिफाइन करते हैं बच्चे किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में. ओके, एनी डाउट? फिर से सुन लीजिए. व्हाट आई स्टार्टेड टुडे, आई एम स्टार्टिंग विद हाउ टू फाइंड द zeros of linear, quadratic and cubic. So first of all, what I've done, linear polynomial, which is quite easy. Just put the polynomial equal to 0 and you will get the values of x, which is called 0 of a linear polynomial. 1 is there. Now if we want to deal with quadratic, so we are using the method splitting the middle term, or actually we call it a factorization. So we make 2 factor by splitting the middle term. Okay, now here first factor equal to 0, second factor equal to 0, you will get 2 zeros. Now if I am dealing with cubic, so बच्चे in cubic we will use a method which is known as hit and trial. Hit and trial, first of all we define the divisors of constant values. तो constant values इसका मतलब ये हमारे trials हो. Then I will trial them one by one. ये आपको करना ही पड़ेगा बच्चे, हो सकता है 4-5 ट्रायल करने पड़ जाए. Anyone which gives you the value 0 is a hit trial. तो वो आपका एक 0 हो जाएगा definitely. And then you will proceed it in 2 ways. First by long division like this, or by synthetic division. Now it's up to you कि आप इसको किस तरह से क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं. This is the basic of your long division. Okay, or I can say factorization. Okay, come on to my next part. आप चेक कर सकते हैं बच्चे, if you are checking your book on page 44
एनसीईआरटी बुक बच्चे, यू विल सी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, फाइंड आउट द जीरोस। इसने फैक्टराइज लिखा है बच्चे, हम इसको फैक्टराइजेशन ही बोल सकते हैं, बट मैंने आप आगे जीरोस फाइंड आउट कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फैक्टराइजेशन एंड देन वी कॉल इट अ जीरो फाइंडिंग पार्ट। गॉट इट? यस बच्चे, हिट एंड ट्रायल मेथड सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा। एंड इफ यू विल सी, आपकी बुक में 43 नंबर पेज पे एक एग्जांपल दी हुई है, देखिए ये भी हिट एंड ट्रायल ही है। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल सी, व्हाट आर द डिवाइजर्स ऑफ 120। देखो इसके तो बहुत सारे डिवाइजर्स है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 15, ठीक, और भी हैं बहुत सारे, ठीक। तो अगर ये आपके डिवाइजर्स हैं तो फिर हम इसको आगे कैसे करें? तो इसका एक बेस्ट पार्ट रहता है बच्चे, इसको चेक करना, ठीक। तो इसको हम चेक करेंगे इस तरह से कि सबसे पहले हम इस पे ट्रायल करेंगे, लेट P1। कई बार तो फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है, तो इट विल कम एज 1 क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। इट बिकम्स 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, ये तो सीधा ही जीरो चला गया, तो इसका मतलब हमारा पहला ही ट्रायल हिट हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी विल से, its first value is x is equal to 1. Now its factor is x minus 1. To find out the remaining factors, तो आपको क्या करना है, either by long division or by synthetic division। अब जो बच्चे मेरे से synthetic division के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो ये लीजिए, what is the coefficient of x cube? 1. What is the coefficient of x square? Minus 23. What is the coefficient of x? 142. What is the coefficient of constant value? Minus 120. X is equal to 1 ट्रायल अपना सक्सेसफुल हुआ है, तो here is 1। चेक कीजिए, आपके क्वेश्चन के साथ बिल्कुल सेम आएगा, 1 as it is, 1 into 1, here it becomes 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, minus 21, 1 into minus 1, sorry, minus 21, सॉरी यहाँ 1 आना था बच्चे, तो ये होगा 22। तो चेक कीजिए ये क्या हुआ, minus 22, 120। चेक कीजिए 1 into 120, 120, तो 0 आया, इट विल रिप्रेजेंट अ 0। अब चेक कीजिए व्हाट इज द क्वोशिएंट, यहां से आपको पता चलेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22 इंटू एक्स प्लस 120। चेक कर लीजिए अपनी बुक में, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, दिस इज द आंसर। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, we will just find out the factor of this quadratic by splitting the middle term, ठीक है। ये बच्चे हम लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए कर देते हैं सिंथेटिक डिवीजन, ठीक। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन अच्छी लगती है तो आप लॉन्ग डिवीजन के साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा कि वाई यू आर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन और वाई यू आर यूजिंग
लॉन्ग डिवीजन। गॉट इट? तो ये था बच्चे हमारे पास हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर, और हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। उसके बाद आपके पास बहुत सारे फॉर्मेशंस। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। Now, I'm starting with your topic, which is known as algebraic identities. बच्चे आपको इस टॉपिक में लगेगा कि यू आर अगेन रिपीटिंग क्लास 8th, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सेम वे में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करें। बट मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं आज, तो जरा ध्यान देना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एवरी वन ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। चलिए मैं सभी को ओपन करता हूं। आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू वेदर यू नो इट और नॉट। Sir, a square plus b square plus a c square plus 2ab. A square plus 2ab plus b Sir, square. a square plus b square plus 2ab. Very good, a square plus b square plus 2ab. very good. Now Yes, come sir. on to this one. A cube plus A b cube cube plus plus b cube plus 3ab plus square 3ab 2ab 2 plus 2ab plus 3c plus 3a. अच्छा, किसी को इसकी वैल्यू पता है? No sir. नो सर। सर गैस मार सकता हूँ मैं शायद। चलो मारो मारो, गैस गैस मारो। सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 4 इंटू a 4ab प्लस नहीं सर 4ab इंटू a प्लस b। चलिए वेरी गुड। Can I? सही है। आपको नहीं बच्चे, आपको गेस नहीं, अब आपको एक मेथड सिखाते हैं बहुत मजेदार। एंड यू विल फाइंड आउट a प्लस बी पावर 8 इन फ्यू सेकेंड्स। मैं क्या बोल रहा हूं? इन फ्यू सेकेंड्स। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप थोड़े ही सेकेंड्स में फाइंड आउट करेंगे। लीजिए, आज आप एक नई चीज सीखिए। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं बच्चे। हाउ वी विल राइट इट? 1 1 1 1 1 1। नेक्स्ट आई कैन स्टार्ट 1 2 3 4 and 5. Now what I can write starting with 1 1 plus 2 3 यहां लिखूंगा, 3 plus 3 6 यहां लिखूंगा, 6 plus 4 यहां लिखूंगा। आप इसको कितना भी लेंथी कर सकते हो। कम ऑन टू देयर। फिर अगेन 1 के साथ शुरू करूंगा। 1 plus 3 4 4 plus 6 10। अगेन आई स्टार्ट विद 1 1 plus 4 5। अगेन आई स्टार्ट विद 1। आप इसको नीचे तक कितना भी लेके जा सकते हैं बच्चे। तो मैथमेटिक्स में इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। नीचे कितना भी जा सकता है। और सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन पास्कल? फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। ये वैल्यूज क्या रहेंगी से? ये हमारे किस काम आते हैं बच्चे? चेक कीजिए। अभी मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द आइडेंटिटी टू सॉल्व इट। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने क्या करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे कीजिए। ए स्क्वायर बी पावर 0, ए पावर 1 बी पावर 1, ए 0 बी स्क्वायर। और ओवरऑल पावर देखिए, ओवरऑल पावर 2 plus 0 2 1 1 2 0 2। ओके, अब मैं नेक्स्ट में चलूंगा तो कैसे चलूंगा? ए क्यूब बी 0, ए स्क्वायर बी 1, ए 1 बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा? ए 0
बी क्यूब। नेक्स्ट आइए, ए पावर 4 बी 0, ए क्यूब बी 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, a1 b cube, and last a0 b4। अब क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपको देखनी होती है पास्कल ट्रायंगल। आपका फार्मूला रेडी है, देखिए पास्कल ट्रायंगल में ये कोफिशिएंट लीजिए 1 2 एंड 1, यहां लगा दीजिए 1 2 एंड 1। आपका फार्मूला रेडी हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले में ये कोफिशिएंट लीजिए, यहां लिख दीजिए 1 3 3 1। आपका फार्मूला रेडी हो गया, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab प्लस बी क्यूब। अब नेक्स्ट वाले में ये लगा दीजिए बच्चे 1 4 6 4 1। आपका फार्मूला रेडी हो गया, a पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेना बच्चे, 4ab क्यूब एंड b पावर 4। वेरी गुड। आप में से एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर a माइनस बी क्यूब होता, बहुत अच्छे, आप यहां माइनस लगाइए और क्या साइन चेंज कीजिए, फर्स्ट का साइन पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव, फोर्थ का नेगेटिव, बस अल्टरनेटिव साइन चेंज कर दी। जैसे ये देखिए a प्लस बी का अगर मैं a माइनस बी करना चाहूंगा तो आई विल राइट फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, यानी इट विल कम एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8th टर्म, 9th टर्म, किसी भी तरह से आप आगे फार्मूला मूव कर सकते। ठीक है, ये शॉर्टकट है हायर टर्म्स को सीखने का। बट चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आई थिंक ये तो मैंने आपको एडिशनल बता दिया, हमने ये आइडेंटिटीज 8th क्लास में कर रखी, विच इज नोन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ इफ minus is there, so I will write it as minus. The next identity which we have already done in it, a square minus b square, which is known as a minus b and a plus b. These are the identities which we are using in class 8th. Next identity थी बच्चे x plus a and x plus b. What I can say, x square a plus bx प्लस ए बी। तो ये भी मेरे इस क्वेश्चन की क्या है, फॉर्मेशन है, जिसको मैं यहां पे क्या करता हूं, यूज करता हूं। ठीक, कि हाउ वी कैन से दिस क्वेश्चन। Got it? This is the first part, second part, and third part, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बच्चे ये आपने सब ने आई थिंक की हुई है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सॉल्व इट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। तो बड़ा सिंपल सा होता है बच्चे, तो वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6, है ना, इजी। Now this is x a, this is x and b, so we will write it as x square
a plus b into x plus ab. Simple. 1 2 3 4 3000 plus 30 सॉल्व कर दीजिए, है ना? तो वी कैन यूज. अब if somebody ask you how will you factorize this, तो ये भी बच्चे हमने ऑलरेडी 8th क्लास में किए हैं, बट ये फॉर्चुनेटली 9th क्लास में रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस. तो आई विल राइट इट एज 5/4x होल स्क्वायर y/3 whole square. Now, the identity which I can use to solve this kind of question is a square minus b square. तो वो आइडेंटिटी क्या होती थी बच्चे हमारे पास? ठीक, वो आइडेंटिटी हमारे पास होती थी बच्चे. वेरी गुड. एक मेरे पास करेक्शन आई है, 6 + 5 ये 11 होता है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1100. वेरी गुड, थैंक यू. तो हम इसको आगे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आई कैन सिंपली फैक्टराइज दिस एज 5x अपॉन 4 प्लस y/3, 5x अपॉन 4 minus y/3. So this is known as AB and this is known as A minus B. And what we call it? Factorization. Got it? So this is the way we can solve the question. Yes. बच्चे एक चीज और देखिए, यहां होना चाहिए था 5/2, थोड़ा सा लाइव में गड़बड़ हो रही है. 5/2 होल स्क्वायर एंड यहां होना चाहिए था y/3. तो आई कैन राइट 5/2 एंड दिस वन. प्लीज करेक्ट इट. गॉट माय पॉइंट ना? 25/4 can be written as 5/2 into x whole square and this way. तो this is the way we can use the identity. ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चे जिनको आपने 9th 8th ग्रेड में as it is सॉल्व किया था. And in next session we will move to next identities which will comes to you. अच्छा, एक आइडेंटिटी फिर थी बच्चे आपके पास, ये भी 8th की आइडेंटिटी थी, a plus b plus c whole square. So we will simply use it as a square plus b square plus c square plus 2 times ab, bc and ac. ये ट्रिपलेट को सॉल्व करने का मेथड है, बट इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस काइंड. Okay, that's all for the day. If you have any query, you can ask me right.